Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss the Candida albicans. It causes the vaginitis, oral thrush, diaper rash, chronic mucocutaneous candidiasis, and also the some other disseminated infections like right-sided endocarditis, candidemia, and endophthalmitis. So let's discuss it through the picture memory. So as you can see, this is the Canada flag, from which we can remember that it is the Candida species and it is the most common cause of the opportunistic mycosis. Now you can see that this is a dimorphic butterfly. Dimorphic means dicolor in shape. One is the blue and one is the green. So ये दो कलर में है, तो it is called as a dimorphic species. That is pseudo hyphae जो है it is found at 25 डिग्री सेंटीग्रेड and जो true hyphae है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में बनता है. एंड नेक्स्ट आप लोगों को ये एक वैन या कुछ इस तरह की गाड़ी नज़र आ रही है कि जिसमें आइसक्रीम जो है वो बिक रहा है. ठीक है, इसको अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 37 फ्लेवर्स, विच मीन्स या विच रिमाइंड्स अस दैट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड कैंडाइडा फॉर्म्स द germ tubes. Now you can see that these are the Candian shrubberies और 20 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे हमारे पास ये थर्मोमीटर भी शो किया गया है. इट शोज़ दैट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कैंडाइडा जो है वो हमारे पास यीस्ट फॉर्म में होता है और इसकी जो हाइफी है वो स्यूडो हाइफी की फॉर्मेशन होती है. एंड as cat is shown in the picture, so it is the catalase positive and it is the normal flora of the GIT, oral cavity, upper respiratory tract and the female genital tract, but sputum culture को ये contaminate कर सकता है. So now remembering its some diseases, as you can see this baby is crying and it is hanging in the diaper lag swing, which reminds us that it causes the severe diaper rash when exposed to the heat and the humidity. Now you can see this is the old man climbing and this is the boy which is playing. It has a tongue which is showing the white patches. So it causes the oral candidiasis in the immunocompromised individual and those in the patients who are using the inhaled steroids. And white patches appears in the mouth, which can be scraped off, and KOH is used to prep the plates. KOH को याद रखने के लिए ये हमारे पास यहाँ पे एक बास्केट सा बना हुआ है जिसके ऊपर KOH लिखा हुआ है. सो इट इज़ यूज टू रिमेंबर. इसको हम प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड वाइट पैचेस ऑफ द टंग शोज दैट इट कॉजेज द ओरल कैंडिडियासिस. Next you can see this is the cartoon like tube which reminds us the pink tube that is esophagus. So it also causes the esophagitis और esophagus के अंदर भी हमारे पास white pseudo membrane बनाता है. Now you can see that maximum 100 lbs लिखा है which reminds us के it causes the AIDS defining illness. Maximum 100 CD4 cells present होने चाहिए. Next you can see in this picture that there is a school teacher which is hit by the snowballs and her जो उसका सारा जो सामान है वो नीचे गिर गया है. ठीक है, तो इट रिमाइंड्स अस दैट इट कॉजेज द वेजाइनल कैंडिडियासिस और वेजाइनाइटिस, इचिंग एंड डिस्चार्ज विच इज़ फेवर्ड बाय द हाई पिच. तो हमारे पास क्या होगा, दिस जार ऑफ कैंडी इट रिप्रेजेंट्स अस दैट डायबिटिक्स के अंदर और जो मुख्तलिफ़ किस्म के पिल्स हैं दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन पिल्स एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स, दीज ऑल कंडीशंस प्री डिस्पोज टू द वेजाइनल कैंडिडियासिस. नाउ you can see in this board that playground open until 4 pH, which reminds us कि जो हमारे पास कैंडाइडा स्पीशीज़ है वो 4 pH तक जो है ग्रो करते हैं. 4 pH से अगर हमारे पास pH ज़्यादा होगा तो हमारे पास कैंडाइडा इन्फेक्शंस नहीं होंगे. ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी दैट ये हमारे पास हर्ट शेप्ड टॉम्स शो किए गए हैं विच रिमाइंड्स अस दैट इट ऑल्सो कॉजेज द एंडोकार्डाइटिस एंड एंडोफ्थाल्माइटिस एंड मोस्टली आईवी ड्रग यूजर्स जो है वो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं. तो ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व को मोस्टली इन्वॉल्व करता है. इन दिस एरिया यू कैन सी द पाइन जोन्स आर formed, pine cones are present. So it reminds us that azoles are used for the
minor infections. So major जो azoles है, that is the fluconazole, is the drug of the choice. And in this case you can see that this is the frog. Frog reminds us that amphotericin B is used for the major infections and the disseminated infections. Play nice, which is written here, it reminds us that the nystatin, nice for nystatin is used for the oral and the esophageal candidiasis. And next is the resistant candida के लिए हम caspofungin यूज़ करते हैं. That reminds us that this man, which is the immunocompromised, it is wearing the winter cap, so it is reminds us of the caspofungin. Lab diagnosis, how we will do the lab diagnosis? Budding yeast or pseudohyphae, they appear gram positive and it is visualized by the calcofluor white staining. Culture हम करते हैं तो हमारे पास जो Candida albicans है, it forms the germ tubes at 37 degrees centigrade as we have discussed, and chlamydiospore are also formed by it. PCR and spectrophotometry भी use कर सकते हैं. So here ends the Candida albicans. Hope you like the video. Like, subscribe and share with your friends. See you in the next video. Allah Hafiz.